Okay, so this is day two of many where we are learning about the ERP project of Nitiraj Engineers in order to take a call on rebuilding this project. In attendance, this side from MR Software is Shantanu Dhanuka, and from Nitiraj, Mr. Rajesh Patwal and Swati ma'am. So let's begin. All right, Shantanu, today we are going to cover some part of project in which inventory information I will try to give. Okay, So inventory is basically uh, having five different levels, okay, starting with item, then mhm, assemblies and sub-assemblies, okay, then product, right, not product, it is called as model, okay, then accessories, okay, and then combination. okay. So first thing I'll be beginning with items. Mm-hmm. Okay. You can see on the left side, there is a icon items. Yes, I can. Yeah, I'm just clicking it. So it will be selected. And it is populated now. So, anything on inventory is basically items, means even the models, the accessories, everything is called as items. Right. Okay. Okay, so now here what we have is the category. If you see the cursor, category. Right. Yes. And by default, it is ticked on show all. Hmm. So otherwise, there are categories which are having all these categories within the items. Okay. Just a moment. So if I go to the next page here, you can see further categories. They are sorted alphabetically here. Right. So basically, okay. So there are about 105 categories. Mm-hmm. So items are divided into these 105 categories. Okay. Okay, that is first thing which I just wanted to show you. Mm-hmm. Now, here I'm just going into the grid of the items. Right. So here the item code, every item has got a unique code. Okay. You have a name of item, description, category. This category is, as I told you, these 105 categories what we can see here. Mm-hmm. Now, for example, instead of show all, I remove the show all tick and I select one of the categories called as maybe assembly. Right. Okay. So let assembly come here. There are different kind of, again, the category names are different. Indicator assembly, job work assembly, things like that. Mm-hmm. So maybe say I go in indicator assembly. So on the right side now I'm seeing only indicator assemblies Okay. because here show all is gone and I've Actually, this selected is a indicator category assembly here. filter. Yeah, that's fine. That's fine. Okay. So now here uh, the whole thing is divided into category also, as well as now I'll open one of the items. Say for example, I'll open this very first item 100540. Open in the sense, now here is a tick. Okay, this green tick here. Can you see this tick, blue tick? Yes. If I click here, so now the very first top item has been selected. Okay. Mm-hmm. अब इसमें ये होता है कि there are four things: BOM,
quality plan, quality drawing, and revision. This is there for all the items. Okay. Just hold on. Mayank? Now, if I want to see the bill of material का एक basic meaning तो मालूम होगा शांतनु आपको? Yeah, but still, for the records, I would state what I understand. Bill of materials is basically the the ingredient or the recipe by which, in combination of what you add, what items, so that you get a finished product. That's basically what I Correct. understand by bill of material. Oh, perfect. Absolutely perfect. Okay. So here, when I say BOM and I click here, show items of all subgroups. Now, subgroup and category मध्ये काय difference आहे? एकूण एकच आहे ना? So here the name subgroup is used, actually all category. Okay. Yeah. So as soon as I click there, ह्याला लहान कसं करू इकडनं? एक minute. Let me make the screen a little bigger. याला इकडे लहान करण्यासाठी काही नाही का? काय ना तिथेच छोटं करतात. All right. So what it shows that this particular assembly is a NEP4 red indicator and the code is 100540. Correct? उस आइटम का, उस असेंबली का ये यहाँ पर BOM आ रहा है. अभी इस BOM में there are so many items. Okay. अभी इसके अंदर ऐसा है कि इसमें फिर असेंबली, अगर मैंने यहाँ पे असेंबली डाला, हाँ, तो ये BOM के अंदर ये 1 2 3 4 5 असेंबलीज है. ओके. और बाकी जो है वो रॉ मटेरियल है डायरेक्टली. अगर ये असेंबली हटा दिया मैंने, ये जो सर्च में असेंबली डाला इसको हटा दिया, तो मतलब ये अगर मुझे इंडिकेटर बनाना है तो पहले ये 5 असेंबली बनाना पड़ेगा. और बाकी फिर रॉ मटेरियल है जो उसमें दिख रहा था. ओके. फॉर एग्जाम्पल ये जो NEPL 727 नाम की जो असेंबली है, दैट इज वन ऑफ आवर मदरबोर्ड्स एक्चुअली. ओके. तो इसका अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं यहाँ पर, यानी इसको अभी टिक करता हूं. ओके, आई एम टिकिंग इट ओवर हियर. तो सेम स्क्रीन वापस आ गया और इसको मैंने ये टिक किया, तो वो जो यानी वो जो मेरा इंडिकेटर है उस पे ये जो मदरबोर्ड है, ठीक है, उसके अंदर ये इतने आइटम है. ओके. इसमें शायद असेंबली नहीं है, या इसमें भी और कोई असेंबली रह सकती है. इसमें कोई असेंबली नहीं. करेक्ट. ओके. तो वो जो पीसीबी है उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट है, वो करके वो पीसीबी बनती है. सो आई गो बैक हियर. ते ठीक आहे, ते सांगतो मी नंतर. मला आधी त्याला बेसिक कल्पना देऊ द्या हाऊ इट गोज. So this is next page again. So there are something like about 14 records. Earlier it was showing 18 records. So something like about 32 items are there on this PCB, in this PCB population. Correct? Okay. मी त्याच्या मागच्या आयटमला कसं जाऊ परत? Okay. So I just close it over here. So I come back to original code which I had selected 100540. Yeah. ठीक है. मतलब कि इसमें ऐसा है कि कोई भी असेंबली मैं बनाता हूँ तो उसके अंदर मुझे BOM डालना है. तो BOM डालने का यहाँ पर एक दिया हुआ है. हाउ यू मेक अ BOM ऑफ अ पर्टिकुलर असेंबली. ठीक है. वो असेंबली कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर मेकिंग एन असेंबली. ओके, परफेक्ट. And you can add some more raw material also into that if you want to. Right. Okay. So this is just to basically show you how the assembly BOM is been seen over here. Okay, perfect. Now, if you want to see the data entry program of making an assembly, I can show you right away. Yeah, I would like to see that. See that, okay. So now this is a code 100540, which is a NEP4 red indicator. जिसकी ये assembly है. This is only assemblies which are used in that. So I remove this assembly word here. So now all the items on that particular assembly, जिसमें raw material भी है और assemblies भी है. Okay.
Okay. So now if you want to see, if I want to make any change in this assembly, in Hmm. this BOM, okay. So if I have to make any change, I have to go in edit. No, sorry. Okay. Okay. Here I have to go in for making create new bill of material version. Can you see this? Yeah. I click here. So it is asking me whether I have to do a cloning because there are so many items. So if I have to Right. just say change one small item, Uh-huh. so it asks me copy BOM from another item. So once if I click here, it will again show me, it will take me to the item master. Yeah. So I can select an item over there. I can select that item in the sense I can select, see, it has gone to this item master. Hmm. I'll go to show all. Yeah. So I select whatever assembly I want into this. There are all the ways of selection. Search me, I can give a code number so that it will directly select, or I can give the name, it will select. So Yep. if I select XYZ assembly over here and go back over there, then I'm closing it here because I don't want to disturb that assembly right now. Okay. Yes. Or otherwise, what I can do, I can select one of the items here. Say, for example, this screw. There are two Hmm. numbers, quantity two numbers. I Okay. selected this. Okay. And here, if I want, quantity change करता है तो वरतून edit म्हणून and okay. I can go to edit over here and I can change the quantity. Instead of two, I may put 3, 4, 1, whatever I want. Okay. Or if I want this quantity to be removed, I have to just put this delete. So this item will go away from this BOM. Okay. That is how I can edit it. I can, if I want to add something new item, it's a बोल ना हा बेल वाजली तर थांबायचं कोणी आलं तर म्हणा मी मीटिंग मध्ये तासभर येऊ द्यायचं नाही अनलेस काही इमर्जन्सी असेल तर माझा एक मित्र येणार आहे विजय शिंदे तो आला त्याला इथं पाठवून द्यायचं थांबायचं बाहेर yeah in case if I want to add some new item into this BOM then I can do this add BOM elements. Okay. That's fine. I'm just clicking that. It takes a So little time because the database is anytime you very edit, delete, or add an Mm, item, does mm. it create a new revision of the BOM? Correct. We are right now into a create a new BOM version only. Okay. That is what we And click first. That is why what it is is the allowing me to remove item or change the quantity or add item. okay? So So right let's now we are say into revision only. you made some changes Hmm. and you've created like version 132 I, and I, I'll, I'll show you right now. Just give me a moment. then you decide that version 132 is not good for you. Then can you revert back to 131? Revision. No, no. Revision will always be the latest revision will be taken in future. The old revision record you will see. Okay, that's just for logging purpose. That is just for what purpose? Logging, audit log. Yes. Okay. So here, if I want to add any item, it has again taken me to the item master. Hmm. I'll do one thing. This IC 555 जो है ना ये मैं ऐड कर देता हूँ ये BOM में. So I'm making it okay. It will ask me the quantity. I say quantity 1. Okay. This code number is 1, 1, 2, 4 bar 0 or 1. Okay. I say okay. So that item has been added. And now if I want to say correct. Now this draft has been created. Now if I want to activate this BOM, okay, this is in draft mode right now. Can you see that color red draft? Okay. This is 18 July, create draft, user login RRB means मेरा नाम है, work commenced और वो अभी draft mode में है. अभी इसको अगर मैं activate करने जाता हूँ, तो it will ask me कि आपने क्या change किया वो डालो. Whatever I want, I can put in text. So I may just say added IC 555 and I'll say okay here. Okay. Okay, now it has been activated. Okay. So this is 100540, right? I just come out for your information. I just came out here.
And this is the indicator what we had seen earlier, in which we added one IC. Okay. Mhm. So now I go and again see the BOM of it. Means I go on this blue tick, this white tick I click, and here I go for again BOM, show all items of BOM. So Hmm. this IC is saying which was not there earlier. Correct. Right. Okay. Now I want to remove it. Yeah, So because again this I was go for on testing. create new BOM version here. Hmm. And anyway, that item is only selected right now. So I just say delete quantity. Are you sure to delete the selected BOM item? Yes. It has been deleted. And then again I activate. Again I say remove. I see 555 is my comment on this. And I OK it. Hmm. So it will again become activated. Active. Hmm. So if I want to see various versions of BOM of this particular assembly, I can Hmm. see कि ये देखो ये हो गया इसमें. ये Yes, I draft see one, that. Yeah. yeah, this is removed and then it was added. So all that history I get. Yeah, But yeah, now, that's okay. yeah. So see, basically, when it comes to manufacturing activities like ours, any electronic industry or whatever you do, Huh. here you have items which we purchase as a raw material. Then there are different categories of item which we have given, say 105 or odd kind of categories as per our convenience. We have divided them in different categories. Okay. Okay. And then we make bill of material. Now, for example, I'm just coming out of this, again going back to the original item master file here. Mm-hmm. Here I remove assembly from here and click to show all. Okay. Now suppose for example here I go in model. Hmm. This I can do here also और ये category में भी model होगा. But I just go here in model because इसमें category name already है. ये देखिए ये category name है. Hmm. Category Yes. name है और इससे model कहाँ नहीं आया? इथे सर्च मध्ये रेड मध्ये क्लिक करून category name क्लिक करा. Okay. This search में ये अगर जो मैं मॉडल डाल रहा हूँ तो ये मुझे ये सर्च मॉडिफाई करते आता है. मतलब ऐसा है ये जितने भी यहाँ दिख रहे हैं ये सब वो ग्रिड में दिखा रहा है. Hmm. इसमें Okay. अगर मैंने जाके कैटेगरी नेम को उठाए इधर चार कैटेगरी नेम को टिक कर दिया Hmm. और फिर अभी ये सर्च में बहुत कुछ है और एंड और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. दिस इज ऑल फॉर गेटिंग मी सर्च इंजन मेकिंग फास्टर और इजियर. Okay. ठीक है ना. तो इसको मैंने ओके किया. अब देखिए कि जहां कैटेगरी नेम में मॉडल होगा वही आएगा फॉर इधर. ओके. नाउ आई मेड मॉडल. सो ऑल द कैटेगरी नेम में मॉडल आ गया. यानी ये मेरे जो फिनिश प्रोडक्ट है हाँ. तो मैं प्रोडक्ट बोल रहा हूँ या मॉडल्स बोल रहा हूँ उतने ही इसमें दिखेंगे. ये भी बहुत ज्यादा है. आई विल जस्ट शो यू फॉर योर इंफॉर्मेशन. देयर आर अबाउट 5018 models have been created. Right. Okay. Okay, now instead of models, if I want to see accessories, I'm just trying to give you one funda here. Hmm. Why ka IES hai? Yes. Okay. Now all these accessories have come, which are about 421 accessories. Mm-hmm. Okay. Now see, accessory is one of the category. They Right. are like assembly only. Even model is like assembly only. Hmm. Correct. Okay. असेंबली मतलब एक से ज्यादा उसके ऊपर आइटम उसके बिल ऑफ मटेरियल में है वो असेंबली हो गया. Hmm. तो मॉडल इज ऑल्सो लाइक assembly only. Accessory is also like assembly only, but then they are in different categories. I have said when I say model, it's a finished product for me. Right. Okay. Now what happens is models and accessories put together makes a combination. Right. So here if I just put combination, okay, so all these are the combinations are 13,000. Why models are only 5,000, accessories are only about 400, but then their permutations are many again. Yeah. Okay.
So the combinations today are 13,062, what you can see there. Yes. Okay. So now when these combinations are created, like see, I can create any model, I can create any accessory, I can create any assembly, I can create any raw material also. Okay. Okay. But combinations I don't create. Then how do they get created? That's what I'm explaining you. Now what happens is whenever a sales order is getting keyed in, हाँ. so वो लोग पहले मॉडल सिलेक्ट करते हैं सेल्स ऑर्डर वाले, हाँ. और फिर वो मॉडल जब भी बनता है ना, तो उस मॉडल में अभी मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड होल्ड करिए. कुठले मॉडल सांगा एखादं, थांब मी आता मॉडेल्स टाकून देतो. मॉडेलचं कोड देईल NPW820Q. हा हा बरोबर. NEP 100 printer PCU. Okay, if I'm just selecting this model and I'm ticking this here, okay. Now याला accessories कुठे असतील? Okay, here is the accessories over here, right? Okay, ये जब मैं मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ शांतनु, whenever I must have created this model, I have given that these two accessories are allowed on this model. Okay. So when a sales order guy keying in the sales order, that time first selects the model. Okay. Okay. वो मॉडल सिलेक्ट करने के बाद वो एक्सेसरी का एंट्री करता है, वो उसका डेटा एंट्री प्रोग्राम ऑफ कोर्स अलग है सेल्स ऑर्डर डालने का. हाँ, वो अपन बाद में देखेंगे. अपन बाद में देखेंगे, लेकिन वो मॉडल सिलेक्ट करने के बाद उसको ये दो ही एक्सेसरी सिलेक्शन को आता है. ही कैन सिलेक्ट आइदर ऑफ द टू और बोथ द एक्सेसरीज. Okay. विद दैट मॉडल. ओके. Okay. And he तो could ये select none मॉडल, as well. सॉरी, He could select none as well. he could select none as well. Yes, he could select none as well. Okay. So वो ये अभी देख लीजिए, ये दो है यानी 2, दोनों सिलेक्ट किया तो 3 हो गया, मतलब 4 कॉम्बिनेशन हो गए, राइट. Okay. वो मॉडल के साथ 2 एक्सेसरी, मतलब अगेन बाइनरी में आप जाओगे 1001 11 एंड 00, मतलब कोई भी आप सिलेक्ट नहीं करोगे. मतलब बेसिकली देयर द मॉडल के साथ ये 2 एक्सेसरीज है, मतलब 4 कॉम्बिनेशन आपके हो गए. करेक्ट ना. तो जब भी वो मॉडल सिलेक्ट करेगा और एक्सेसरी सिलेक्ट करेगा या जो भी उसका, और उसको जब भी वो सेव करता है, एसओ को, सेव ऑर्डर को सेव करता है, वो टाइम पे अगर वो कॉम्बिनेशन ऑलरेडी पहले है तो नया कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, नहीं तो ये अगर नया है तो वहां पर जाके कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है. Right. Okay. Okay. So that combination gets auto created. Auto created at the time of keying in the sales order only. And if it is already existing, then it will not be created. I mean, It we will use take that. the same combination number and save the order. Okay. ठीक है. Okay. I would like to see how do you create these models and accessories and Correct. I'll create assemblies. item first. One raw material first. Okay. So now I am here categories आहे ना, हे categories आहे का? Okay, add item. नाही तसं नाही ते, but anyway. So here I am going and creating a particular add item. Okay. Okay, this code is coming auto. The next, whatever was the last item created name. तुम्ही नेम टाका, मग आपण जेव्हा कॅटेगरी टाकू ना त्याच्याप्रमाणे तो कोड जो आहे तो चेंज होतो. Okay. Okay. So say for example, I make an item over here. What कुठला item? HS Raw material display sticker. Okay. See if I say health scale display sticker. This is the name of my item which I am creating afresh. Okay. Category. Where is the category? Here. Okay. Sticker. The category, I know the, see here there are so many 105 categories what we saw there, right? Yeah. So it is, I have to select one of the categories for this item. So if suppose I make here a category selection is sticker. Yeah, sticker. Okay. I say okay.
सो ये स्टिकर आ गया. ओके, देन इट कम्स मटेरियल टाइप. मटेरियल टाइप इज इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और ये सब होता है. तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल में डालते हैं. ये इसके लिए डालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में, क्योंकि वी हैव डिफरेंट स्टोर्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल. तो जो इलेक्ट्रॉनिक में डाला है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में ये आइटम रहने वाला है. ओके. इसके लिए इसको इलेक्ट्रॉनिक डाल दिया. पैरामीटर ग्रुप, कैटेगरीज एडिट करने का भी स्क्रीन होगा ना, वी वुड हैव दैट. यस, अभी ये कैटेगरी किया ना मैंने, कैटेगरी स्टिकर उसी में से सिलेक्ट किया. I mean to say to add more categories or to Yes, I'm going to category over here. Okay, I can add the category right over here. Okay, from there only you have the option. Yeah, so I need not go to the category master. When I'm selecting a category for this newly created item, there if I want new category to be created, I can just create it over here. I can edit it. I can delete the category also, something like that. Okay. Okay. So I've done this. This parameter group is of no use right now, but let me check what it is. Okay, got it. This I will explain. Category group I'll explain in a while to you. Okay. Parameter group. Okay. Then you have purchasing measuring unit. So if you are purchasing this item in numbers or kg or square foot or whatever. So this I'm going to purchase in numbers actually. So I select number here and I OK it. And stock measuring unit. Stock measuring unit is also number here. See, many times what happens is कि I am buying certain items in kg. से मैंने नट बोल्ट है फॉर एग्जांपल, मैंने नट बोल्ट किलो के हिसाब से लिया है, लेकिन उसका स्टॉक में मेजर करने वाला हूँ नंबर्स में. मतलब क्या होता है कि जब मैंने 5 किलो बोल्ट का ऑर्डर दिया और 1 किलो बोल्ट यानी समझ लो 500 पीस है फॉर एग्जांपल, तो जब भी मैं परचेस ऑर्डर दूंगा तो केजी में ही जाएगा, क्योंकि उसका परचेसिंग यूनिट अगर मैंने यहाँ केजी डाला होगा तो ठीक है. लेकिन जब उसका गुड रिसिप्ट नोट बनता है तो मैं 5 किलो तोल के उसका जीआरएन बनाऊंगा, गुड रिसिप्ट बनाऊंगा. वो जैसे जीआरएन बनेगा तो मेरा 500 मल्टीप्लाइड बाय 5 2500 वोल्ट मेरे स्टॉक में बढ़ जाएंगे, किलो में नहीं बढ़ेंगे. ओके. क्योंकि मुझे आगे वो करना है, वो किलो में तो मैं यूज नहीं करने वाला हूँ, उसको मैं नंबर में यूज करने वाला हूँ. इसके लिए स्टॉक मेजरिंग यूनिट और परचेसिंग यूनिट दो अलग अलग है. ओके, गॉट इट. अगर ये दोनों को इधर मैंने समझो केजी डाला फॉर एग्जांपल और यहाँ नंबर डाला, तो यही वो पूछता है कि ये दोनों का रिलेशनशिप कितना है, मतलब 1 केजी यानी कितना आइटम है ये बताओ. हाँ, वो मुझे डालना है. ओके. तो वो मैं ऑर्डर दूंगा परचेसिंग यूनिट में, जीआरएन बनेगा परचेसिंग यूनिट में और स्टॉक बढ़ जाएगा मेजरिंग यूनिट के अंदर, क्योंकि वो दोनों का रेशियो मैंने डाल रखा है. ओके. वेयर हैव यू केप्ट दैट रेशियो? ये करूं. See, one purchase unit is equal to one stock unit here. हो गया. एक्चुअली ये दोनों नंबर ही है. अगर मैं केजी तो एक ही आने वाला है बेसिकली. ओके. ये जो आपने पूछा ना मैं कहाँ डालता हूँ, वो यहाँ डलता है. ओके, ठीक है. अभी ये पैरामीटर ग्रुप में भी मैं आता हूँ, 1-2 मिनट दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. आई विल जस्ट ट्राई एंड क्रिएट दिस कंप्लीट थिंग. ये करूँ मोटा. अभी ये फंक्शनैलिटी है इस पर्टिकुलर आइटम की. जैसे अपन ने देखा था क्या बोलते हैं बिजनेस लोकेशन में. हाँ, वैसे तो हाँ, वैसे कोई भी आइटम अगर करना है मुझे, तो ये फंक्शनैलिटी उसकी मुझे डालनी है उस आइटम के लिए. ओके. कि जैसा आस्क फॉर लेबल्स ऑफ चिल्ड्रन, मतलब अगर चिल्ड्रन मतलब वही बीओएम, मतलब बीओएम में जो चिल्ड्रन है, ठीक है ना. या असाइन लेबल एट शेड्यूल इशू स्लीप है, ब्रेक बीओएम. अभी ये आइटम कुछ नहीं, मुझे स्टिकर खाली खरीदना है. इट्स अ रॉ मटेरियल फॉर मी. ठीक है ना. तो इसको मुझे कुछ करना नहीं, खाली इस परचेसेबल को टिक होगा. ये इस परचेसेबल को टिक होगा यहाँ पर, और ये आइटम एक्टिव है, इसके लिए इसको एक्टिव का बाय डिफॉल्ट टिक आता ही है व्हेन आई एम क्रिएटिंग एन आइटम. बाकी मुझे कहीं पर भी कोई टिक टुक लगानी नहीं है. ओके. ओके.
और इसके बाद में परचेस कैटेगरी है। ये परचेस कैटेगरी मतलब ऐसा है कि मेरे पास में परचेस डिपार्टमेंट के अंदर इतने लोग काम करते हैं, तो ये आइटम के लिए जिम्मेदार कौन है? ओके कौन है? रईस। ओके, ये रईस देखता है ये आइटम को, तो मैंने रईस 1 को टिक किया। 1 2 3 कोण आता याला 1 करू का आता? हाँ, और इसको ओके कर दिया। तो परचेस कैटेगरी रईस 1 आ गई। लेबल प्रीफिक्स कुछ नहीं इस आइटम में, बिजनेस लोकेशन भी कुछ नहीं डाल रहा हूं मैं, ठीक है। और HSN कोड मुझे अगर डालना है तो मैं डालूं तो भी ठीक है, दिस इज ऑप्शनल। नहीं डाला तो भी ठीक है, GST रेट भी डाला तो ठीक है, नहीं डाला तो ठीक है। ऐसा क्यों? फिर आप इससे जीएसटी बिलिंग नहीं करते हो क्या? देखिए, बिलिंग जो होता है वो कस्टमर करता है हमको ना, सप्लायर करता है ना हमारे नाम पे। हाँ तो ये एक्चुअली हमने आइटम के ऊपर डाल रखा है फॉर हमारे सेलिंग आइटम के लिए। ओके जब भी हम यहाँ पर HSN कोड वेइंग स्केल का डालेंगे, क्योंकि ये आइटम इज फॉर कॉमन फॉर एवरीथिंग, हाँ तो जब भी मैं मॉडल बनाता हूं तब मेरे को HSN कोड और GST रेट यहाँ डालना जरूरी है। अब वो कैसे तय होता है ये भी आपको बता देता हूं। हाँ यहां पर अगर मैंने टिक किया नहीं, इज मॉडल कुठे आहे? हाँ? ओके ओके, ये कैटेगरी में मान लीजिए कि मैं मॉडल करता हूं। अच्छा, स्टिकर इज ऑलरेडी एन आइटम कैटेगरी आई बिलीव। यस यस यस। मतलब कैटेगरी के भी कैटेगरी हो सकते हैं? नहीं, कैटेगरी के कैटेगरी नहीं है। ये आइटम के अंदर जितने 105 हमारे कैटेगरी थे उसमें स्टिकर एक है, मॉडल एक है। नहीं, बट स्टिकर जो है वो प्लेन आइटम था, मॉडल नहीं था, ये कैसे समझ में आएगा? क्योंकि मॉडल कैटेगरी नहीं है, खत्म। अब ये इसको मान लीजिए मैंने इसी को मॉडल डाल दिया यहाँ पर, हाँ ठीक है। यही स्टिकर चल रहा है, इसको मॉडल डाल दिया। हम्म अभी इसको मॉडल डालने के बाद में मेरे को यहाँ HSN कोड और GST रेट डालना चाहिए, हम्म क्योंकि ये मैं सेल करने वाला हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, इसको इस परचेसेबल उड़ाता हूं मैं, रुकिए। हम्म ये इस परचेसेबल तो नहीं मेरे लिए, हम्म ठीक है ना। फिर इसके अंदर क्या है, आज फॉर चिल्ड्रन, नहीं ते तर ठीक आहे, हा फिनिश प्रॉडक्ट टाकावा लागेल ना। ब्रेक BM वो भी जान दो। इज अ फिनिश प्रोडक्ट कुठे आहे याच्यात? कुठे आहे? हाँ, इसको मैंने यहाँ टिक किया अभी, दिस इज अ फिनिश प्रोडक्ट फॉर मी, ठीक है। ये जैसे मैंने टिक किया यहाँ पे ये 4 चीजें आ गई नहीं नीचे, क्योंकि अगर ये मेरा मॉडल है तो ये इंफॉर्मेशन मुझे भरनी पड़ेगी। अगर ये टिक मैंने हटा दी तो चारों नीचे का गायब हो गया। मतलब ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन हाँ आइटम के हिसाब से ये स्क्रीन भी थोड़ी बहुत चेंज होती, मेरा ये कहना है आपको। ओके गॉट। और उसकी पूरी चेन, पूरी लिंक मैं आपको डिटेल में दे सकता हूँ। यही खाली एक बार स्ट्रक्चर समझ में आया हर चीज का है ना, चाहे बिजनेस लोकेशन हो चाहे आइटम हो, कि हाँ ये सब इसके पीछे लिंक क्या क्या है। हाँ, सो हाउ डज द फंक्शनैलिटी वर्क? यू कैन एक्सप्लेन इट लेटर। Yes, I can definitely explain it for every tick. What is the meaning and how it affects your further links. This is what I told you for business location also. ओके यस आई रिमेम्बर। Right? तो अभी इसको मैं फिर से इस परचेसेबल पे चला जाता हूँ, इस एक्टिव पे चला जाता हूँ, और ये मॉडल की जगह इसको फिर मैं स्टिकर कर देता हूँ। ये यहाँ भी जाने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर जाके टाइप कर सकता हूँ STI, तो उस पर जो भी आ जाएंगे, तो स्टिकर ले लिया मैंने, ठीक है। मॉडल टाइप इलेक्ट्रॉनिक है, ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया, नथिंग मोर आई गॉट टू पुट इनटू दिस एंड आई जस्ट से क्रिएट। ओके, अब क्या होता है, ये क्रिएट का है C00 सोहेल का नंबर, कोड नंबर। हाँ ओके, आता ते सर्च कॉपी करून टाकावा लागेल त्याच्यात. कुठे? तो कोड आहे ना सीझर हाँ, 0059 हाँ. तिथे टाकून द्यायचा परत. पण हे दोघांचा उपयोग काय? ऍक्च्युली असं होतं की आपण फॉक्सप्रो हाँ, मला माहिती आहे, आता तसं काही उपयोग आता काही उपयोग नाही. नाही, सर्च कोड काढून टाकलं तरी चालेल. बराबर, ये सर्च कोड अभी मैंने ये कोड से उठा के यहाँ डाला है, उसका एक्चुअल में कोई जरूरत नहीं है। ये जब हम फॉक्स प्रो से इसमें आए थे ERP में, तभी वो उसके कोड और इनके कोड अलग हो सकते थे, इसके लिए वो किया था हमने। ओके अभी फॉक्स प्रो इज गॉन विद द विंड, तो अभी ये जो कोड है वो एक भी रहेगा तो चलता है हमको, ठीक है ना। ओके ठीक है। एक एक सेकेंड होल्ड करना, फिर हाँ इसको मैं यहाँ क्रिएट कर देता हूँ, तो ये आइटम क्रिएट हो गया। हाँ हाँ राजवीर, हेलो, हाँ बोल। हाँ हाँ
Now, Rajveer, all this I do not know any background before whatever you people have discussed with the doctor or anything. I think your mom knows about it. So because I don't know कितना दिन लगने वाला है ट्रीटमेंट क्या है because now you'll be going to the hostel next month, right? तो ये चीज का बैकग्राउंड मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, so I cannot tell you anything. Better you speak to your mom on this. बराबर ना, because I do not know what is the history behind this. Yeah. Or you want me to know and take a call on this? Tell me, tell me. Shantanu, please hold for a while. Just give me 2 minutes, please. No problem. बोल. Hmm. Hmm. Yeah, Shantanu, I'm back. Sorry for the interruption. Hello? Shantanu, can you hear me? सोनू मेरा कॉल चालू है बात तो बोल रहा था तुम कह नहीं दे रही Hello, he's coming in 2 minutes, sir. No problem. No problem. He's in washroom. He's coming in 2 minutes. Okay, no hassle. अच्छा
तारीख शंतनु परत कसं काढून म्यूट वगैरे करायचं नाही करायचं काय याला ऍक्च्युली स्टॉक शेअरिंग होऊन जाईल मग. ते नाही करत आहे मी पण या शंतनु Yeah, I'm sorry. I just took the break, so yeah. no Can no we no continue? problem how do I इथेच क्लिक करून द्यायचं. हा, बरोबर. क्लिक करून द्यायचं. हा. आणि आता हे. इथे आहे. yeah Shantanu so we'll continue now Yes. so this HS display sticker नाम का item create हो गया Hmm. okay like that if suppose I want to create one assembly and put the BM on assembly Hmm. so if suppose in case if I want to create an assembly it is very simple again I'll try and show you here I'll Hmm. go in addition over here Yeah. so I'm creating a new item means everything okay Okay. and say I give the name as XYZ okay मला ते वेइंग स्केल मॉडेल नाही करायचे असेंबली करायची इंडिकेटर प्लॅटफॉर्म असेल HS प्लॅटफॉर्म असेल. so I say HS platform assembly is in its name not the category or anything okay Hmm. then description I'll just give as whatever I want is a new fabricated platform for HS scale okay now here category I'll give as Assembly. workshop assembly because this is going to be made in workshop which we know so I gave the thing is workshop assembly so by giving the category workshop assembly this does not become an assembly. Hmm. It's just a category name. I'll tell you how it becomes workshop, I mean the assembly. See, all these small things though, I mean, this can be explained as the thing progresses. I'm just showing you, now this is a mechanical kind of a material type. Hmm. So there's a different material type, there are different categories. Okay, that is how they get bifurcated. A parameter group, I'll tell you again, purchase measuring unit is number here. No, sorry. This is not a purchasable item. So I will not write anything here. So here I go for assign label. एक मिनिट नाही assembly म्हणून द्यावं लागेल. Assign break BOM do not ask has label a job or finish item trading item is accessory is active automate finish label plant and machinery is purchasable. Okay, got it. See here, this is basically an active item and I'm not ticking it on purchasable also. Okay. Is purchasable कुठे आहे याच्यात madam? Okay, so I'm not ticking here. Hmm. Okay, it means a item is surely assembly. That is how the software takes it as. Oh, but okay, but that's kind of complex. Yeah, we can change it. Mm-hmm. We can change it. So here I made this name and I'm just going to save it, do nothing. Now see what happens. I have to just say
So I am creating it. इसको खाली मैंने एक्टिव रखा है क्योंकि आइटम एक्टिव है और इसको परचेसेबल में मैंने नहीं डाला है. Okay. Okay, and I'm just creating it here. So this assembly would in turn be, a raw material for another assembly, which will be finally purchasable. Yes, yes. एक मिनिट याची कॅटेगरी काय आली? नाही तिथं मी सर्च मध्ये टाकून ठेवलं ते काढावं. याच आयटमचं काय होतं? HS प्लॅटफॉर्म. वेळ गेले ते. एक मिनिट. Okay. Now this is the item which I created just now. They're leaving here, madam. C005989. Okay. The category name is workshop assembly. Now, further, I want to put bill of material for this. So I'm going over here, the blue tick, and I'm saying create new BM version here. And say, for example, I do not want to copy any existing BM and clone it. For example, if I want to do it, I have to just select this and select that item, whichever I want to copy from. If not, then I have to keep on adding. Add BM elements. Right. Okay. Then again, I'll see the master file of the items. I select one of the items, put the quantity, go add another item. That is how I complete the BM. Okay. And it will all be in the draft state until you activate Until I say active and I put the comments on that. And so let's say there was something in draft and you closed the software and you came back again. So will it still show in draft? Right now, I'll do that. Right now, it does not do that. No. So this is, I'm in draft mode right now because I'm about to start creating the BM. Okay. Okay. Right now, this is in draft mode. Can you see here? Yeah, I can see that. So I just come out of it. And I close. I close this, for example, software. I don't close, whatever it is. Okay. I don't want to close the application as a whole. I came out here. So right now, that BOM of this HS platform assembly is not being completed. So it is in draft mode. If I would have added one or two items there and not made it activated, it will still remain in the draft mode with those one or two items only. Okay. Okay. So now here, suppose I take this HS platform assembly. Okay. Here, if I say edit item, I can still further edit it. That item which is selected, again, it goes into the item master screen. If I want to make any changes, I can edit it. Okay. This is for seeing that item, view item, because this edit facility I may not give to all. All those will be restricted. Only the people who has the capability of editing an item, they will be only given power to edit. Seeing, I may give to many people in the company, those who can see that item. Means various parameters, everything they can see. Okay. So that is why you have edit, you have seen, and then you have delete. And this particular now, further I'll explain you about this blue tick. In this blue tick, I have a bill of material, which you saw now in a lot of details. You saw how the bill of material can be activated, can be modified, everything. Okay. Now here I'm going on the next tab, which is called as quality plan. Okay. Before I explain you quality plan, I have to give you some theory. For all the items I have got in different shapes and format, different levels. मतलब रॉ मटेरियल लेवल में है, असेंबली लेवल में है, मॉडल लेवल में है, एक्सेसरी में है, कॉम्बिनेशन में है. Okay. As per ISO system, every item I have got in the factory, I can define a quality plan. Quality plan मतलब ऐसा है कि if you have a pen in your hand, for example, तो वो पेन का लेंथ कितना होना चाहिए, उसका लेंथ में कैसा मेजर करने वाला हूं, और 100 में से कितने पेन जो मेरे पास आएंगे उसका मैं लेंथ चेक करूंगा. मतलब उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा चेकिंग का. और अगर मैं लेंथ चेक करने वाला हूं
तो कैसे चेक करने वाला हूँ, स्केल से करने वाला हूँ या वर्नियर से करने वाला हूँ, जो भी इक्विपमेंट में यूज करने वाला हूँ वो पैरामीटर चेक करने के लिए वो भी उसमें आता है। ठीक है, मतलब एक आइटम जो मैं बना रहा हूँ उसके अलग अलग पैरामीटर्स होंगे, वो मैं कैसे चेक करने वाला हूँ, कितना फ्रीक्वेंसी में चेक करने वाला हूँ और किस चीज से चेक करने वाला हूँ. सो आई एम जस्ट क्लिकिंग a quality plan tab over here. Okay, here since it's a new item, quality plan is not been given, so I have to add quality plan. Create new quality plan. So I go here for create new quality plan. याच्यात असं असतं की आपल्याला पॅरामीटर्स जे आहेत ते त्याच्यामध्ये डिक्लेअर करून ठेवावे लागतात. Okay, आपल्याला so I go back here and I'm ticking this blue here. No, sorry. I edit this item here. And that is where this parameter group comes into the picture, which I told you I'll explain you, right? So I click parameter group here. फ्रेम टाकून द्यायचं. कुठे टाकू Frames frame? आहेत. ओके कुठे ओके? इथे फ्रेम. आता सेव्ह करून घ्यायचं. Creative मध्ये जायचं. जे फ्रेम याच्यावर ते क्वालिटीचे ग्रुप दिलेले आहे असं. क्वालिटी प्लॅन. क्वालिटी प्लॅन. Actually update केलेले आहे आपण, पण इथे काहीच नाही त्याचं. Okay, there is some slight glitch over here, Shantanu. Okay. Basic. हे बंद करा. हां, इथे क्लिक करा. हे चुकलं. त्याचं म्यूट केलं. हां. Quality plan, okay. Create new. Okay, किया, मैडम ने करेक्ट करके दिया. Okay. So what we did over there, that parameter setting में हमने frame नाम का एक ग्रुप डाल दिया. तो फ्रेम नाम के ग्रुप में ये सारे पैरामीटर दिए हुए हैं. Okay. अभी यहां पर आ गया चेक द वेट और सैंपल साइज, मतलब 1/10, 1/10 और 5/10 वो सैंपल साइज यहाँ डाल सकते हो. एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डाल सकते हो कि वेट उसका जो है वो कितना होना चाहिए और कितना टॉलरेंस आप दे रहे हैं. एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बोले तो कितना वेट आना चाहिए उसका, और टॉलरेंस मतलब आप दे सकते हो 5% या 10% या 10 ग्राम कम चलेगा, 20 ग्राम ज्यादा चलेगा, वॉट एवर. So all that you can key in over here. Then checking the surface for finishing or scratches. ये जो आप चेक करोगे, पहले वाला वो वेइंग स्केल पे चेक करोगे, दूसरा जो होगा वो विजुअली चेक करोगे, तीसरा जो होगा वो विजुअली चेक करेंगे, चेक द वेल्डिंग क्वालिटी. फोर्थ जो होगा चेक द साइज एंड डायमेंशन, वो आप स्केल लेके चेक करोगे. ठीक है, तो ये जो सातों आठों पैरामीटर है इस पर्टिकुलर फ्रेम के लिए आपको जो भी डालने हैं आप यहाँ डाल दीजिए. और कैसे चेक करने वाले हो, 1 में से 100 में से 10 जो भी है ना, इसका क्वालिटी प्लान यहाँ डिफाइन हो रहा है. Yes, that's true. ओके, ये डाल के बताऊं या आप समझ जाओगे? ये मतलब इसका एक डेटा एंट्री क्वालिटी प्लान का हर आइटम का है, लेकिन नॉट नेसेसरी कि हर एक आइटम का मुझे क्वालिटी प्लान डिफाइन करना ही है. जिसका मुझे चाहिए वो मैं डिफाइन करूंगा. Okay. ओके, तो राइट नाउ मैं इसमें से अभी बाहर निकल रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई रजिस्टर खरीदना है बाजार से या कोई आईसी खरीदना है, तो उसका क्वालिटी प्लान उसके सब ग्रुप से आएगा, क्योंकि उसके सब ग्रुप में मैंने डाल के रखा होगा कि ये आइटम है, मतलब आईसी नाम का आइटम है, तो उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स है, और फिर जो पर्टिकुलर आईसी में क्रिएट कर रहा हूँ उसके अंदर मुझे यहाँ डालना है कि वो आईसी के अंदर मुझे वो जितने भी आइटम दिए उसमें से कौन से पैरामीटर चेक करने हैं. पॅरामीटरचे ग्रुप बनवून ठेवलेले आहेत आपण, आणि ते मग आपण तिथे सिलेक्ट करतो प्रत्येक
ते ग्रुप कुठे बनले जातात ते दाखव. ते आयटम मध्ये गेल्यावरती पेन्सिलला क्लिक केलं तुम्ही वरती आयटमला गेलो. थांबा थांबा. इथं पॅरामीटर ग्रुपला बरोबर. हे सगळे इथे ग्रुप्स दिसतात आपल्याला. तर हे जे आहेत हे काय क्यूपी वगैरे ऍक्च्युली काय झालं की जेव्हा आपले रेडी होते ऑक्सफोर्ड मध्ये प्लॅन क्वालिटी प्लॅन तर ते आपण त्यांचं क्वालिटी प्लॅन डायरेक्ट असे क्यूपी नंबर टाकून घेऊन टाकलेले आणि मग नंतर आपण नवीन जे केले ईआरपी मध्ये त्याचे ग्रुप बनवून घेतले आपल्याला म्हणजे सोपं जाईल कम करताना असं घेतलं. ओके अभी इसमें ऐसा है शांतनु कि व्हेन आई गो हियर ऑन पैरामीटर ग्रुप आई क्लिक ओवर हियर. ओके पैरामीटर ग्रुप. अभी इसके अंदर मैं नए पैरामीटर ग्रुप चाहिए तो क्रिएट कर सकता हूं. फॉर एग्जांपल इफ आई से इसमें फ्रेम नाम का पैरामीटर ग्रुप ऑलरेडी था, इसको अगर मुझे नया क्रिएट करना है तो आई हैव टू गो ऐड ग्रुप. ऐड ग्रुप में मैं गया और नया पैरामीटर ग्रुप मैंने क्रिएट किया. फॉर एग्जांपल से XYZ, इसको ओके किया तो यहाँ पे XYZ आ जाएगा. कहाँ है? अच्छा एक से तो सबसे नीचे गया. ओके XYZ यहाँ आ गया. इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसके अंदर मुझे जो जो पैरामीटर चेक करने होंगे ये ग्रुप में, इसको मैंने यहाँ ऐड पैरामीटर किया. इसका लेंथ देखना है और मेथड और मीडियम. मेथड और मीडियम मैंने मुझे कैसे देखना है? स्केल से देखना है. स्केल से मैं इसका गिनूंगा. ओके फिर दूसरा आइटम मैंने इसमें ऐड किया. इसका मुझे वेट भी चेक करना है इस आइटम का और ये मुझे वेइंग स्केल से चेक करना है. इसको ओके किया और इसका मुझे जो भी देखना होगा, वेल्डिंग देखना है, विजुअली देखना है, वो सब मैंने डाल दिया है XYZ नाम के पैरामीटर ग्रुप में. ठीक है और इसको मैंने ओके कर दिया. अब ये जो पर्टिकुलर ये मेरा IC 555 है, इसको अगर मैं पैरामीटर ग्रुप XYZ दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना, और इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ. पण ते उडवता येईल का आपल्याला? हाँ अब इसको मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ. अभी ये इसमें मैं जाऊंगा और इसको मैं फिर से टिक करता हूं और इसके क्वालिटी प्लान में मैं गया. अपडेट क्वालिटी प्लॅन. हाँ इथे अपडेट क्वालिटी प्लॅन. हाँ काय तो आता नवीन आपण जे टाकले ते येईल तिथे. थोडा वेळ घेईल का? नाही ना तो काही वेगळंच दाखवतो. होत आहे का कॅन्सल ड्राफ्ट करून द्या. अपडेट क्वालिटी प्लॅन. क्रिएट न्यू क्वालिटी प्लान. हाँ की अपडेट क्वालिटी प्लान. हो ते क्रिएट. ओके नाउ इसके अंदर मैंने जो उसके मास्टर फाइल में XYZ नाम का पैरामीटर ग्रुप लगाया था और पैरामीटर ग्रुप में मैंने लेंथ और वेट दिया था जो स्केल से और वेइंग स्केल से डिफाइन होगा. ओके अब इसके अंदर मैं सैंपल साइज डाल सकता हूं. सैंपल साइज ला हिरव्यावरती क्लिक डबल क्लिक नाही येते का? अपडेट क्वालिटी प्लान मध्ये होईल ते. नाही याच्यात होईल. व्हायला पाहिजे पण मॉडिफाय कुठे पुढे हा मॉडिफाय आयटम